उसको इकट्ठा करने की कोशिश होगी मज़हब के नाम पर लोगों के जज्बात से। और अब बात करेंगे हैदराबाद की वाटर वॉरियर कल्पना रमेश की। हैदराबाद के कुएं फन तामीर का शानदार तारीखी विरसा है और कल्पना रमेश जैसे वाटर वॉरियर न सिर्फ इन्हें बचा रहे हैं, नई जिंदगी दे रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से जमीनी पानी भी रिचार्ज हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ये तारीखी विरसा सिर्फ कहानियों तक ही महदूद रहता। अब जैसा कि ये कुएं शहरी गंदगी से छुटकारा पा रहे हैं जो कि बरसों से जमा हो रही है, तह दर तह इन्हें शहर के जमीनी पानी को रिचार्ज करने और पानी की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। हमको बचानी है ये जिंदगानी। I'm here today at the Bansilal step well, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these step wells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater. And when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage step wells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. स्वच्छता और पानी हमको बचानी